Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और विदेश की आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ चंद्रशेखर जी नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Ambrish. Benchmark indices rebound on gains in index heavyweights. Sensex ends 305 points higher. Nifty reclaims 22,150 level. Finance Minister Nirmala Sitharaman says next generation reforms are topmost priority of the government. And World Trade Organization announces enforcement of new regulations to streamline international services trade. इंडेक्स में शामिल बड़े शेयरों में बढ़त की बदौलत प्रमुख सूचकांकों में तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स में 305 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी फिर से 22,150 अंकों के स्तर पर जा पहुंचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार उच्च प्राथमिकता है और विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सेवा कारोबार को सुचारू बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की। और सबसे पहले शेयर बाजारों का हाल। घरेलू शेयर बाजारों में आज 2 दिन की गिरावट के बाद फिर से तेजी दिखाई दी। दुनिया के बाजारों की मजबूती और देश में बड़े शेयरों की खरीदारी के चलते यह उछाल देखा गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 305 अंक यानी 0.42% बढ़कर 73,095 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक यानी 0.34% की बढ़ोतरी के साथ 22,198 अंकों पर जा पहुंचा। सेंसेक्स इंडेक्स के 30 शेयरों में 19 कंपनियों के शेयर बढ़े, जबकि 11 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दिखाई दी। Key stock market benchmarks bounced back today from a 2-day decline driven by buying in some heavyweight stocks amid firm global markets. The BSE Sensex gained 305 points or 0.42% to finish at 73,095. The NSE Nifty rose 76 points or 0.34% to settle at 22,198. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 19 companies appreciated while those of 11 companies declined. Among the Sensex shares, Tata Motors was the top performer with around 2.8% gain. This was followed by TCS, IndusInd Bank and Power Grid. On the other hand, Bajaj Finance and SBI declined over 1%. Bajaj Finserv fell nearly 0.9%. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.10%, while the small-cap index fell 0.25%. In the sectoral indices at the BSE, oil and gas sector declined over 1%. BSE energy sector fell 0.7% and services sector declined 0.40%. On the other side, consumer durables and realty sectors jumped over 1%. Information and technology sector sold 0.75%. और विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की कीमत 82 रुपये 90 पैसे दर्ज की गई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स आज दिन के कारोबार में गिरकर 103.77 पर आ गया।
Chandrasekhar ji, we saw that Friday, we saw there was an almost flat close. Yesterday, the Sensex, took a dive of nearly more than 350 points. So what turned the tide today? Of course, like we said, that there was buying in heavyweight stocks. But apart from that, what were the factors that contributed to this turnaround? This Sensex, when we look at the Sensex, it moves up, it moves down, then again it moves up, it moves down. It travels like a staircase. But what happened on Monday was that there was a net FII selling by around 285 crore. They were net sellers. FIIs were net sellers. And if we look at the markets today, early in the day the market fell down. The opening was very bad. And probably Indian markets, it looked like took some cue from the American market, because US down was marginally lower. But during the day, the market picked up momentum and it went up. And this could be probably because, when DEX opened around midday, so DEX was high, and also this London market, it was also marginally up. So the market took cue from there, and it shot up in the afternoon trade, and it bounced back by 305 points. और लेकिन जिस तरह से बाजार का ऊपर नीचे जैसे हो रहा है, आपने कहा, तो ऐसे में आपको जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं इस बाजार में? ये बाजार तो बहुत तेजी में है आजकल, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो संभावनाएं हैं, बट दे हैव टू पिक अप द राइट स्टॉक्स. उनको एक अच्छे स्टॉक्स खरीदने चाहिए और ब्लू चिप में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. क्योंकि जैसे आज भी कुछ खबर आई, जैसे इंडसइंड बैंक आज भागा है, तो इंडसइंड बैंक में एक खबर थी कि जो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स है वो NCLT ने उनको अलाउ किया है टू टेक ओवर रिलायंस कैपिटल. तो उनका जो ये क्लियर हो गया है, तो इस वजह से आज इंडसइंड बैंक भी भागा है, और टाटा मोटर्स हैं और भागा है. और इस तरीके से जिन शेयर्स ने अच्छा किया है वो TCS है, पावर ग्रिड है, इन सब शेयर्स ने but Chandrasekhar ji, because we do not focus on specific companies in the program, but if you talk about the sectors, which are the sectors that you feel that are, would be the gainers, or where the investors can, think about investing in the near future? Yeah, in fact, auto sector is one, and I would say that the other sector, which one can look at is the battery sector, because, once we have EVs and all those things, battery sector will do well. So there are companies who are making batteries, so they have a lot of scope. And plus those in the space sector and those in the defense sector, because the government is taking a lot of steps to encourage private investment in these sectors. So there are companies, and maybe public sector companies are also there where one can look at. लेकिन इन्वेस्टर्स के लिहाज से हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में किस तरह की संभावनाएं आप देख पाते हैं? बैंक्स तो देखिए, जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ऑब्वियसली बैंक तो अच्छा करेंगे, क्योंकि बैंक तो एक उनको बोलते हैं कि बैंक दे प्रोवाइड द लाइफ ब्लड टू द इकोनॉमी. सो बैंकिंग सेक्टर विल डू वेल. एंड और बैंकिंग सेक्टर में इसलिए और संभावनाएं हैं क्योंकि जब हम देखें तो जो उनका NPA है या बैड लोन है वो जो है कम हो रहा है, और उनके परफॉर्मेंस, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है. तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा. You just mentioned, that the NPAs of the banking sector have been coming down. And so, specifically talking about the NPAs or the non-performing assets, how important a role have the government initiatives and the RBI, steps taken by the RBI provided, bringing down the NPAs? In fact, both government and RBI played a big role, a critical role in to get back their money, and since the laws are in place, so banks are doing well. Right when I asked you the first question about the markets today, you mentioned volatility. Now, volatility, as you said, is the nature of the market. But keeping that volatility in the mind and the way the Indian markets have been behaving, do you think that this is the time to stay invested in the D Street, or should one be booking profit? Well, looking at the market from the market point of view, I think because there's a likelihood that the Modi government will come back to power again. So the market are euphoric, and it's time to stay invested. And on this note, let's go in for a short commercial break. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के अधिकांश बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.3%, हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग 0.9% और जापान का निकेई 0.01% बढ़ा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.8% और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में बढ़त का दौर दिखाई दिया। ताज़ा समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.5% तेजी पर चल रहा था। लंदन के फुट्सी में मामूली बढ़त दिखाई दे रही थी और फ्रांस का कैक स्थिर था। Moving on to the US market, all three US stock indices closed with minor losses in the last trading session, as initial gains were swiftly reversed, with both the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 stepping back from their all-time highs ahead of a busy week for economic data. The S&P 500 ended 0.38% lower. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.16% and the Nasdaq Composite lost 0.13%. Chandrasekhar ji, we see, like we are saying that, there's some important economic data which is due out in this week in US. The first, of course, is the US durable goods data, which is due later today. And then on Thursday, the January report on personal consumption and expenditures, which is a preferred method of inflation, which is a preferred measure of inflation for the Fed Reserve. That will be out on Thursday. So do you think these are the factors that were, weighing on in the US markets yesterday, and they, they closed with a little, with a decline? Markets wait. If you see there's no activity in the market, it means that the market is waiting for some data. And the good news is for the market is that Israel, Hamas, they have decided to declare some kind of ceasefire. So that is good news for the market. And secondly, if you're looking about the Dow Jones and other Nasdaq data. But if we look at the futures, so the futures are all up. Dow futures is up, S&P futures is up, and Nasdaq futures is up. So which indicates that the market is expecting that there will be some kind of rally, or market will remain at a higher level. And also, do you think, especially when we talk about the January report, that, like I said, the January report on personal consumption and expenditures, which is a preferred measure of inflation for the Fed Reserve, which is due on Thursday. So that is also something, that'll, once it comes out, I think the markets are also waiting to see, because that'll sort of give an indication to the markets as to the next steps of the US Fed, when it'll announce the cutting down of, the interest rates. Yeah, that is one thing, which market is expecting. Market has been expecting for long that US Fed will start cutting the rates. In fact, some of the markets, like not major markets, but some countries, like Peru and Czechoslovakia, they have already started cutting down their benchmark rates. So they are not major markets, but it gives some kind of indication that now the interest rates have remained elevated for long, and it's time to reduce them. So market is anxiously waiting for the rates to come down, and if they come down, obviously market will boom. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान विश्व में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान तक पहुंच गई है। वे नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 को संबोधित कर रही थीं। विकसित भारत से संबंधित भारत के विजन को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनियोजित सुधार किए हैं जो आने वाले वर्षों में जारी रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी कर रही है। चंद्रशेखर जी, आप क्या कहेंगे? वित्त मंत्री जी ने ये उम्मीद जताई है कि तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। हाँ, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है उसमें सच्चाई है कि हम जिस
स्पीड से प्रगति कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट कुछ सालों में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने हालांकि ज़्यादा खुलासा नहीं किया कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स क्या होंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि रिफॉर्म्स कंटिन्यू करेंगे। और ये ऑफ कोर्स ये एजम्पशन पे है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी वापस। जी, लेकिन जो जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, तो आप एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से अगर इसको देखें तो आपकी दृष्टि से कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो अब तीसरे कार्यकाल में भारत सरकार को लेने चाहिए? जैसे कि वित्त मंत्री ने खुद ही कहा है कि जैसे स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, जिससे कि और ज़्यादा कंपनियां स्पेस सेक्टर में आएँ। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उन्होंने कहा है कि कोशिश ये रहेगी कि इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाए। और ये रिफॉर्म्स है, प्लस दूसरे और जो कंटिन्यू कर रहे हैं रिफॉर्म, जैसे हमारे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए, उसके बारे में भी मंत्री जी ने बात करी है। तो इस तरीके के रिफॉर्म्स जो हैं वो करने और आगे बढ़ाने पड़ेंगे, और जो एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स हैं उनकी भी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। जी, Mr. Chandrasekhar, you know, the finance minister also said that the government is ramping up the capital expenditure to boost the economy. Now, when we talk about ramping up the capital expenditure, you know, we saw that in the interim budget this year, the government, you know, announced a record capital expenditure of over 11 lakh crore rupees, which was 11% higher than the previous, you know, allocation for this. So how important is that? Yeah, that is very important. In fact, you know, after COVID, government has been focusing on ramping up capex. This helps a lot because this gives a boost to the economy, and the expectations are that the baton of this capital expenditure will now be taken up by the private sector, and once that happens, you know, both government and the private sector, it will give a boost to the overall economy and help India achieve the target of becoming a Viksit Bharat by 2047. Moving on, Finance Minister Nirmala Sitharaman has urged the Reserve Bank of India (RBI) to hold monthly meetings with startups and fintech companies to address their regulatory concerns. While chairing the meeting with top executives of about 50 startups and fintech firms yesterday, the minister said that innovative solutions by fintech companies are essential to the financial services sector. However, they must ensure strict compliance with regulations, she added. The meeting comes in the wake of the RBI's action against the Paytm Payments Bank, which has brought regulatory compliance in the fintech industry into focus. How important is, you know, the finance minister, of course, talked about, like we said, that she addressed this meeting of the startups and fintechs, and she has asked the RBI to address the regulatory concerns in the present scenario. How important is that? It is actually important, you know, once we look at the background, you know, what has happened with the Paytm Payments Bank. Yesterday, the OCL, which is the parent company of the payment bank, they have has issued a press release which says that the Vijay Sharma, he has stepped down from the Paytm Payments Bank, and also the other directors. So now the new set of directors are in place in the Paytm Payments Bank, and but if you look at the background, you know, there was some problem in the this payments bank, and that they did not follow the KYC norms, they did not follow the regulatory norms. So the ministers meeting assumes significance because she wants that all these fintech companies, they must strictly adhere to the regulatory norms so that these problems do not recur. And I think this becomes even more important because of given the fast pace of digitalization that is happening. Fintech companies are playing a major role in that. So I think that also makes it even more important. It becomes very significant that these companies, their concerns and their problems are addressed by the government, and they also adhere to the regulations that have been set out by the RBI. Yeah, fintech companies, you know, because we have to draw a balance between the regulations and the innovations, because fintech companies, they focus on innovation, but in their spree to catch up with the innovation, they should not forget that regulations are also important. And what has happened in the Paytm Payments Bank is something which they should take care. And let's go into another commercial break.
अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra, where today we are joined in studio by senior journalist Chandrasekhar. Let's move on to the next story. In a landmark decision made at the 13th Ministerial Conference in Abu Dhabi, the World Trade Organization WTO has announced the enforcement of new regulations to streamline international services trade. Following extensive negotiations, WTO members finalized the adoption of these rules on 2nd December 2021. Over the subsequent years, each participating member obtained domestic approval, leading to the integration of these rules into individual member schedules. The majority of members have now completed this process, marking a significant milestone in global trade regulation. These regulations, which apply on a most favored nation basis, aim to make authorization processes more transparent and accessible, with commitments to gender equality also included. Chandrasekhar ji, for our listeners, can you just explain what these, what is this announcement that has come out and how important it is? What are the highlights of this announcement? Yeah, the announcement basically is that all the countries, all the WTO members will have to face the same regulatory, or will have to undergo through the same regulatory process. And there will be no differentiation to a particular country and not to another country. So they have agreed that all the countries, all the WTO members trying to invest in services sector will have to undergo a similar regulatory process, and there will be no differentiation, which means that it benefits countries like us, and more the developing nations will benefit from this announcement. और चलते हैं अगली खबर की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के स्टार्टअप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य की बड़ी आकांक्षाओं के साथ ये अधिक बेहतर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष से भी कम समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। श्री गोयल 18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किए जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ के पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को एक मजबूत और लचीले स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए विचारों के इस उत्सव में शामिल होने और इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया बड़ी महत्वाकांक्षाओं, बड़ी संभावनाओं और लीक से हटकर सोचने की क्षमता, विचारों के साथ कुछ नया करने की क्षमता से संबंधित है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप मोबिलिटी से लेकर भोजन और कपड़ा तक हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि स्टार्टअप्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है भारत के विकास में। तो स्टार्टअप जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, इसका मूल्यांकन किस तरह से करते हैं और क्या और चीज़ें हैं जो अभी, जैसे मार्च में सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिनको अभी हमें और करने की ज़रूरत है? स्टार्टअप में सबसे स्टार्टअप की इम्पोर्टेंस पे तो बात करने की कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप्स आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या ज़ीरोधा हो गया या इस तरह की ग्रो हो गए, इस तरह की कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, स्विगी है या पेटीएम भी है। तो इस स्टार्टअप्स ने हमारी लाइफ को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। स्टार्टअप्स के कुछ इश्यूज होते हैं, फंडिंग के इश्यूज होते हैं, और फंडिंग जहाँ होती है तो उसमें देखना पड़ता है कि राइट क्वार्टर से फंडिंग आ रही है, राइट लोगों तक जा रही है, और जो टैक्स कंसेशंस होते हैं उनमें एक इश्यूज होते हैं, वो स्टार्टअप के इश्यूज होते हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और स्टार्टअप का जहाँ तक महत्व है, तो स्टार्टअप इज प्लेइंग एंड विल कंटिन्यू टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारी लाइफ में। लेकिन सरकार के सामने अभी क्या चुनौतियां हैं इस पूरे क्षेत्र में और आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए? सरकार के आगे तो चुनौतियां स्टार्टअप के आगे हैं कि उनके फंडिंग की प्रॉब्लम है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये था कि फंडिंग विंटर आ गया। फंडिंग विंटर का मतलब है कि जैसे उनकी फंडिंग एक तरीके से जो है वो कम होती जा रही है। तो हमें कुछ डोमेस्टिक फंड्स को, जैसे सरकार का एफर्ट भी रहा है कि डोमेस्टिक फंड्स को क्रिएट किया जाए, जिससे कि जो स्टार्टअप है, जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे पैसा लगाया जाए।
क्योंकि स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप में फेलियर रेट बहुत हाई होता है। तो आप जैसे आपने पैसा लगाया, तो हो सकता है आपने 10 कंपनियों में पैसा लगाया, उसमें से 2 ही कंपनी चलें। तो स्टार्टअप में फंडिंग में ये इश्यूज आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर चूँकि इस तरीके के अपने रिस्क ले सकता है, लेकिन सरकारी बैंक या सरकारी संस्थान शायद इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो 10 में से 8 फेलियर एक्सेप्ट कर सके। लेकिन इस तरीके का हमें इकोसिस्टम जो है फंडिंग का डेवलप करने की ज़रूरत है। Now, Chandrasekhar ji, you mentioned the problems that are being faced by that's a major challenge for the startups, like funding. So, in respect of that, if you look at that, the government has in the last few years also, and in this budget also, announced major initiatives for the startups, including giving them tax rebate, and also giving them so many years of when they don't have to pay any taxes, and also creating a separate funding for them. So how important are the government initiatives in promoting the startups? Actually, startup is basically a private initiative, to be very but these private initiatives, they need, because earlier, if you see, the funding used to come from basically from the US and the European markets, and Chinese funding is also there in the startup. So the major issue is with regard to funding. And funding, if there's a funding, it comes, the another issue is the tax treatment. Because of the failure rates, startup, if we have a ecosystem which promotes funding, and which ensures that the startups don't have to initially they are not initially burdened with regulations. And that is what the startups want. And these are the efforts, these are ongoing efforts which the government is taking. जी, और रेल मंत्रालय ने रेलवे पुलिस बल आरपीएफ में कांस्टेबल के 4,208 पदों और सब इंस्पेक्टर के 452 पदों पर भर्ती से संबंधित अधिसूचना को गलत और भ्रामक बताया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई अधिसूचना ना तो आरपीएफ और ना ही मंत्रालय की ओर से जारी की गई है, और उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। Moving on to commodities, oil prices remained steady today as investors assess the ongoing situation in West Asia. In intraday trade, Brent crude futures were trading around 0.01% lower at $82.52 when reports last came in. The US West Texas Intermediate crude futures saw a marginal increase of almost 0.03% to trade at $77.60 when reports last came in. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने के मूल्य में आज तेजी दिखाई दी और सोना 161 रुपए की बढ़त के साथ 62,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी 90 रुपए बढ़कर 69,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दिन के कारोबार में सोना बढ़त के साथ $2,045.50 पर जा पहुंचा। चांदी $22.85 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Chandrasekhar ji, right at the beginning of the program, you mentioned the situation in the West Asia, which has also had an impact on. So do you think that, the oil prices that have remained steady today is also because of, like you said, that there is some kind of a solution seems to be coming out? Yeah, in fact, it's not about solution which may be taken, but Israel has talked about the ceasefire, Yes. And once the ceasefire comes into operations, then the market will stabilize, and it does have an impact on all other markets. जी. And thank you so much, Mr. Chandrasekhar, for coming to the studio and having this useful discussion with us. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices rebound on gains in index heavyweights. Sensex ends 305 points higher. Nifty reclaims 22,150 level. And Finance Minister Nirmala Sitharaman says next generation reforms are topmost priority of the government. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar. वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
Market Mantra.